Hello, my dear students. Welcome back to your mathematics class. Dear students, we have started Unit 9 Algebraic Expressions and Identities of your NCERT book. In my previous video, I explained you that what do you mean by algebraic expression, and in which we have seen that algebraic expression is a combination of constants and variables using the mathematical operators. Now, dear students, in this video, we will study classification of polynomials in detail. So, I told you that polynomial is an expression containing one or more terms with non-zero coefficient is called polynomials. Now, let us do the classification of polynomials. So, dear students, very first is monomial. I told you that mono means one. So, a polynomial which contains only one term is known as a monomial. Example, let us see an example. Like, we can take a single constant also. We can represent, let us take another example as 2x. सिंगल टर्म इज देयर, कॉमा नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस होगा तो वो दो टर्म्स बनेंगी. लाइक 3z, दिस इज अ पॉलिनोमियल. लाइक 3/2z, this is a polynomial. Means single term is there, nothing is added or subtracted. कुछ भी add या subtract नहीं किया हमने, only multiplication and division is there. So these are single terms, single terms, like only x if we have. This is also a monomial. So after this, we have binomial. What do we have? Binomial. So dear students, now bi means two. Bi means two terms. So an expression which contains two terms. अगर दो टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी को हम बाइनोमियल बनाएं, दिस इज़ 2, इसमें मैं x ऐड कर देती हूँ, दिस इज़ अ बाइनोमियल. या फिर मैं इसमें -x कर देती हूँ, देन ऑल्सो इट हैज़ बिकम अ. इसी तरह इनमें से किसी को भी हम बाइनोमियल बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस 3/2z प्लस x कर दिया मैंने, दिस इज़ अ, मीन्स वी हैव टू टर्म्स. और टर्म्स को अलग अलग किससे किया जाता है? प्लस माइनस से. Similarly, we have a trinomial. If we have three terms, trinomial. If we have three terms, अगर हमारे पास कितनी terms आ जाती हैं? 3 terms. तो हम क्या कह देंगे? It is a trinomial because tri means 3, right? तो example like 2 terms थी यहाँ पर, हम इसमें एक और term कुछ भी ले लेते हैं, से 3y ले लेते हैं. नाउ 3 टर्म्स आ गई. इसी तरह मैं इसे इफ़ आई वांट टू मेक इट अ ट्राइनोमियल, तो 2 टर्म्स आर ऑलरेडी देयर, लेट मी ऐड और सब्ट्रैक्ट one more term. For example, let me subtract 3/2z from here, or if I'll add it, then also first term, second term, 3 terms, total 3 terms are there. That means it is a trinomial. Similarly, we have a tetranomial. Tetranomial. We have a tetranomial. So as the name suggests, tetra means 4. आपने सुना होगा कि अमूल दूध है, उसकी टेट्रा पैकेजिंग होती है, मीन्स 4 लेयर पैकेजिंग. सो टेट्रा मीन्स होता है 4. सो इफ एन एक्सप्रेशन कैरीज 4 टर्म्स, देन इट इज़ अ tetranomial. सो एग्जाम्पल, let us make this as a tetranomial. हमारे पास 3 terms we already have. Let me add one more, say x here. Now here 2 terms are different. ये same नहीं है बेटा. Here x raised पर 1 is there. If no power, that means 1 power, and this is x square. So both these terms are not same. They are not like terms. यहाँ अलग power है, यहाँ अलग. So now 1, 2, 3, 4 terms आ गई. So this is tetranomial. So इसके बाद and so on. 5 टर्म्स पॉलिनॉमियल हो सकती हैं. सो द एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स. अब आपको समझ आ गया होगा. विद नॉन ज़ीरो कॉफिशेंट, कॉफिशेंट ज़ीरो नहीं कहीं भी होना चाहिए, ज़ीरो कॉफिशेंट कहीं नहीं देखा. इफ़ नो कॉफिशेंट इज़ देयर, दैट मीन्स 1 इज़ देयर. So I hope it is clear to you. So note down all these things in your notebook.
So dear students, now our next topic is like terms and unlike terms. Now we all are familiar with the terms. What do we mean by terms? So now like terms and unlike terms means terms that have the same power of the same variable are called as like terms. Means power भी same होनी चाहिए और variable भी. Like you can see the examples of like terms 3x 2x. तो यहाँ पर वेरिएबल की बात की जा रही है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए. तो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है. देन उस सेम वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए. मीन्स हेयर नो पावर इज देयर, दैट मीन्स 1 x raised per 1. हेयर ऑल्सो x raised per 1. दैट मीन्स these two are like terms. Similarly, here in this example you can see 3y and 7y. We'll talk about the variable that is y. y raised per 1, y raised per 1 means variable भी same और उसकी power भी same. In the second example you can see we have three different expressions, 7x square, 6x square, x square. But see, all the variables are same, x, x, x. Power is same, 2, 2, 2. तो like terms कब कहलाती हैं? जब variable भी same हो और power भी same हो. Here example is 3y square and 2y square. So what is the variable? Y and y. What is the power? 2, 2. That means these are like terms. हमें coefficients को नहीं देखना. Here the coefficient is 3, here 2. But coefficient पर depend नहीं करता. Like terms के लिए क्या चाहिए हमें? Same power. किसकी? Same variable. Now let us see the unlike terms. Terms that do not contain the same power of the same variable. Like these two are unlike terms. 3x, 3y. Here the variable is x. Here the variable is y. दोनों वेरिएबल अलग हैं. तो लाइक टर्म्स कब होती हैं? जब दोनों वेरिएबल सेम होते हैं और पावर भी सेम. अब यहाँ पावर तो सेम है बट वेरिएबल अलग हैं. दे आर नॉट लाइक, दे आर अनलाइक. और कॉफिशिएंट सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर इट इज सेम. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अनलाइक टर्म. हियर वेरिएबल इज सेम x एंड x बट पावर इज डिफरेंट. 1 पावर 2 पावर. तो जब भी बेटा डिफरेंट वर्ड यूज हो जाएगा ना, तो अगर डिफरेंट वर्ड यूज हो गया दैट मीन्स द टर्म इज अनलाइक. अगर पावर प्लस वेरिएबल दोनों में अगर हमने डिफरेंट वर्ड यूज कर लिया है तो मीन्स अनलाइक है. लाइक यहाँ पर x और x वेरिएबल इज सेम पर पावर क्या है? 1 एंड 2 मीन्स डिफरेंट पावर मीन्स अनलाइक. Here variable x, variable y, different variable. Again we have used the word different. So whenever the different word is there, that means the terms are unlike. Here variable is x, variable is x, same variable. Power is 1, same power. So यहाँ पर in these examples we are not using the word different. So whenever we use the word different for power and variable, that means the terms are unlike. Let us see some examples. So here are the two columns, like terms, unlike terms. So dear students, here you can see 2x plus 19x. Both the terms are like terms. Why they are like? Because same variable x, x, same power 1, 1. That means both are like terms. We can add and subtract them. And always remember, अगर terms like हैं तो हम उन्हें plus और minus कर सकते हैं. Like यहाँ plus sign है and both are like x, x, x raised per 1, x raised per 1. So 19x plus 2x को हम लिख सकते हैं 21x. So if the power is same and variable is same, then we can add or subtract them. Then second example, 4w minus 10w. Again w, we have to see the variable को check करना है. w same, power 1, 1 same. दोनों चीज़ें सेम है. दैट मीन्स दे आर लाइक टर्म्स. नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट देम. माइनस साइन है तो माइनस करेंगे. 4 minus 10 क्या होगा? -6w. Similarly, in the next expression, r, same variable, r raised per 1, same power. That means like terms. Next example, 32a square plus 9a square. Again same variable a, same variable, same power 2, same power. तो दोनों के लिए same word use हो रहा है. 8y plus 5y, same variable y,
सेम पावर 1 1. तो अगर वेरिएबल भी सेम हो, पावर भी सेम हो, दैट मीन्स द टर्म्स आर लाइक. नाउ लेट अस सी सम अनलाइक टर्म्स. 2x plus 19a. Here the variable is x. Here the variable is a different variable. So different word use कर लिए, that means unlike terms. Here variable is w. Same variable but power is different. 1 power 2 power, that means they are unlike. We can't add or subtract them. चाहे variable same है but power तो different हो गई, that means they are unlike. And if they are unlike, we can't subtract them. 12r minus 12s, rs different variable. A square a cube, same variable but different power. So again we have used different word, that means unlike terms. 8y plus 5, y raised per 1, here no variable, that means constant term is there. So again unlike terms. So if the terms are unlike, we can't solve them, but if they are like, we can add or subtract them. Yeah. So now I'll see the example. 2x square, we have an expression. Can you tell me which type of polynomial is this? This is a trinomial. 1 term, 2 term, 3 term. So trinomial. Is there any like term in this? 2x square plus 3x minus 5. So यहाँ पर बेटा वेरिएबल तो सेम है x and x, but their power is different. That means all the three terms are different. All are unlike terms. In the second expression, 1 term, 2 term, 3 term, 4. Tetranomial is there. Is there any like term? Yes. 2a square plus 3a square. वेरिएबल ए पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है. यहाँ पर a तो है बट पावर क्या होगी 1, दैट इज डिफरेंट. सो दीज टू आर लाइक टर्म्स. वी कैन ऐड देम. 2a square plus 3a square is 5a square. So last example, let us take an example of like and unlike terms. Beta, if the terms are unlike, we can make a fruit salad. Like we have an apple, we have a banana. If we'll add them, then it is equal to a fruit salad. Unlike terms से क्या बन जाती है, खिचड़ी बन जाती है, means क्या हो जाता है, वो सैलड तैयार हो जाता है. बट इफ़ वी हैव लाइक 1 apple plus 1 apple, विल गेट 2 apples, and 2 apples can be written as 2 into apple. So again, if the unlike terms are there, we'll get a fruit salad, but if like terms, we'll get a bunch of same fruit. So dear students, what do we say? If like terms are there, तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है. सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम पावर ऑफ वेरिएबल. जो वेरिएबल है उसकी पावर भी सेम हो. डिफरेंट वेरिएबल हो तो वो अनलाइक टर्म्स हैं. और इन केस द सेम वेरिएबल इज देयर बट विद डिफरेंट पावर, देन ऑल्सो दे आर अनलाइक. समटाइम्स वेरिएबल्स आर सेम बट दे हैव डिफरेंट पावर. इन दिस एग्जाम्पल इज like x and x square. These are unlike terms because here 1 power, here 2. Same variable xx but different power 1 2. Right? और अगर different ही variable हैं तो कोई issue ही नहीं. Same variable means 4x 5x. Same variable, right? And same power also. If we are having 2 power of z, then the other number must have 2 power of z. Power be same, variable be. So note down all these things in your notebook. Thank you, my dear students. I hope the videos have made your basic concepts very clear to you, and I hope now you will be able to recognize like and unlike terms. And always remember that like terms only we can add. Like and unlike terms we can add or subtract. We can add or subtract only like terms. Like terms can be added or subtracted. If they are unlike तो हम उन्हें प्लस माइनस नहीं कर सकते. Thank you. Subscribe my channel if you like my videos. Thank you and have a nice day.